Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we are going to discuss about slime molds. ये भी हमें टॉपिक रह गया था फर्स्ट टर्म में. Slime molds, a group of unicellular eukaryotic heterotrophic organisms. Slime molds, a group of unicellular eukaryotic heterotrophic organisms. A group of unicellular eukaryotic heterotrophic organisms are referred as slime molds. हम हेटेरोट्रॉफिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफस को स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं. A group of living organisms with flexible lifestyle. Slime molds are called a group of living organisms with flexible lifestyle. A group of living organisms with flexible lifestyle. ये इनका फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल ही है. ये अपने स्ट्रक्चर में, अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज लाते. ये कभी यूनिसेलुलरिटी से मल्टीसेलुलरिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कभी विदाउट सेल वॉल होते तो कभी विद सेल वॉल होते हैं. दिस यूनिकनेस इन देयर लाइफस्टाइल had created a problem in their classification. They are differently classed by different taxonomists. A group of heterotrophs, a group of unicellular organisms, eukaryotic organisms. These unicellular eukaryotic heterotrophic organisms with flexible lifestyle, sometimes they resemble with fungi and sometimes they resemble with protozoa. These slime molds, which are unicellular eukaryotic heterotrophs, resemble with fungi. As like fungi, they are known for spore formation. Slime molds resemble with fungi slime molds resemble with fungi in spore formation. जब स्पोर्स बनाते हैं तो वो फंजी जैसे रिजेंबल विथ प्रोटोजोआ एंड रिजेंबल विथ प्रोटोजोआ slime molds resemble with fungi in spore formation, resemble with protozoa in amoeboid movements. लोकोमोशन में ये प्रोटोजोआ से मिलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में ये फंगी से मिलते हैं. नॉट ओनली दिस, they resemble with protozoa in amoeboid movements and in digestive
and ingestive mood of nutrition. प्रोटोजुआ से भी मिलते हैं, फंजी से भी मिलते हैं. They resemble with fungi in spore formation. कौन? Slime molds resemble with fungi in spore formation. They resemble with protozoa in body movements, in amoeboid movements, in their locomotion, in their movement, and in their mood of ingestive mood of nutrition. फंजे से भी मिलते हैं, प्रोटोजुआ से भी मिलते हैं. फंजे से स्पोर फॉर्मेशन में मिलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और प्रोटोजुआ से न्यूट्रिशन में मिलते हैं, प्रोटोजुआ से लोकोमोशन में मिलते हैं. इसीलिए कुछ माइकोलॉजिस्ट्स ने इनको फंजे में रखा था एज जिम्नोमाइकोटा. माइकोलॉजिस्ट्स classified slime molds, named slime molds, mycologists named slime molds as gymnomycota, that is naked fungi. Gymno means naked, mycota means fungus, naked fungi. Mycologists named slime molds as gymnomycota, naked fungi, and classified them in kingdom fungi. Classified them in kingdom fungi. Mycologists named slime molds as gymnomycota and classified them in kingdom fungi. ये फंजी के साथ, लेकिन बहुत से फीचर्स है फंजी के जहां वो एनिमल्स से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉलोजोइक न्यूट्रिशन एंड लैकिंग सेल वॉल ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव फेज. Moreover, sometimes acting as parasites, engulfing bacteria, engulfing yeasts, engulfing fungi like animals in just two mood of nutrition. These are animal features, but forming spores with cell walls which are of chitinous. These are resemblances of slime molds with fungi. So some say they are fungal animals. Some biologists name them as fungus animals. Some taxonomists. Name slime molds as fungus animal. That is organisms showing characteristics of both fungi as well as animals.
कुछ बायोलॉजिस्ट, कुछ टेक्सोनमिस्ट स्लाइम मोल्ड्स को फंगस एनिमल्स कहते हैं। फंगस एनिमल्स ने फंजे और एनिमल्स के कैरेक्टर्स दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर कॉल्ड माइसीटोजोआ। दैट इज दे आर कॉल्ड माइसीटोजोआ। माइसीटो मीन्स फंगस, जोआ मीन्स एनिमल। माइसीटोजोआ किनको कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। जिम्नोमाइकोटा किनको कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स को। लाइफ स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी किन में है? स्लाइम मोल्ड्स में। लेकिन जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट है, जो आज टेक्सोनॉमी का एरा चल रहा है, मॉडर्न बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड स्लाइम मोल्ड्स इन किंगडम प्रोटिस्टा। मॉडर्न टेक्सोनमिस्ट्स, modern taxonomists classify slime molds modern taxonomists classify slime molds in kingdom protista. In kingdom protista as consumer, decomposer, protista. यानी एट प्रेजेंट जो टेक्सोनॉमिक स्टेटस फंजी का, स्लाइम मोल्ड्स का है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स। वहां हम इनको कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्टा कहते हैं, या मिक्सोमाइसीट्स, फालस फंजी। ये माइकोलॉजिस्ट इनको जिम्नोमाइकोटा कहते हैं, ये जोलॉजिस्ट इनको माइसीटोजोआ कहते हैं, फंगस एनिमल्स कहते हैं। लेकिन ये फंजी से भी मिलते हैं, प्रोटोजोआ से भी मिलते हैं, एनिमिलिया से भी मिलते हैं। ये फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल के ऑर्गेनिज्म्स हैं। प्रेजेंटली इनको टेक्सोनमिस्ट्स ने, यानी स्लाइम मोल्ड्स को टेक्सोनमिस्ट्स ने किंगडम प्रोटिस्टा के साथ क्लब किया है। वहां इनको कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्टा कहते हैं, या मिक्सोमाइसीट्स कहते हैं। देखिए, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मुनीरा के बाद जो दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा है, उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स है आज स्लाइम मोल्ड्स। लेकिन आपने देखा जब हम फंजी की क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, वहां माइकोलॉजिस्ट ने इनको पहला ग्रुप दिया है जिम्नोमाइकोटा। हम जिम्नोमाइकोटा कहे, हम माइसीटोजोआ कहे, हम कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्टस कहे, ये सब के सब स्लाइम मोल्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। स्लाइम मोल्ड्स are eukaryotic heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms. In heterotrophy, they can be parasites, they can be saprophytes, and they can be
phagotrophs यानी hollow zygs. In heterotrophy, या heterotrophy mode of nutrition, slime molds can be saprotrophic, parasitic, and phagotrophic. जिसको हम हालोजिग भी कह सकते हैं. Halozoic in their mode of nutrition. हेटेरोट्रॉफ्स है, लेकिन ये बाकी फंजे की तरह उनसे अलग है. बाकी फंजे सैप्रोट्रॉफ्स है या पैरासाइट. ये सैप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये फैगोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. हालोजोइक एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक भी है, सैप्रोट्रॉफिक भी है. तो यहां भी ये फंजे के साथ भी रिजेम्बलेंस दिखाते हैं, एनिमल्स के साथ भी. These slime molds, which are heterotrophs, which are eukaryotes, are present in terrestrial habitat. Slime molds are mostly terrestrial in their habitat. Slime molds are mostly terrestrial. Slime molds are mostly terrestrial in their habitat. They live in cool, moist, and shady place. Cool, moist, and shady place. They are residents of cool, moist, and shady place. They live in soil. They live in soil and consume bacteria, yeasts, and fungi. They live on bark. They live on bark, decaying wood, and humus. ये स्लाइम मोल्ड्स लैंड हैबिटेट के रहने. हाँ, एक्सेप्शनली कोई एक्वेटिक भी हो सकता है. देर आर अबाउट 700 to 900 स्पीशीज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स आर टेरेस्ट्रियल. They live in moist soil. They live in shady places. They live in colder regions. They live where there is humus. They live where there is decaying wood. They play a role in decomposition of wood. Along with bacteria and fungi. Along with bacteria and fungi, slime molds are known for decomposition of vegetation. Slime molds
are known for decomposition of vegetation. ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं और ये सॉइल में रह के बैक्टीरिया को खाते हैं, फंजी को खाते हैं, यीस्ट को खाते हैं. सो दे आर सेप्रोट्रॉफिक, दे आर फैगोट्रॉफिक. दैट क्रिएट्स ए controversy. Where shall we place them? That creates a problem. That it is their classification is in a flux. We fail to properly place them because they show a flexible lifestyle. So organisms with flexible lifestyle, which are heterotrophs, which are eukaryotes, have been placed in kingdom Protista as slime molds, as consumer decomposer protista. One more unique feature of these slime molds, there are about 700 to 900 species of slime molds. There are about 700 to 900 species of slime molds. Majority are terrestrial. Majority are terrestrial. All are heterotrophs. कोई इनमें से ऑटोट्रॉफ नहीं. They lack chlorophyll. They are achlorophyll. Achlorophyllous. That is without chlorophyll. They can be having other colors, but they are non-green. Achlorophyllous, that is non-green. All slime molds are non-green, that is without chlorophyll. हाँ, they have pigments. उनमें pigments होते हैं, जैसे anthracene and anthraquinones. Anthraquinone pigments, anthracene and anthraquinone pigments are present. Anthracene and anthraquinone pigments are present in slime molds. Anthracene and anthraquinone pigments are present. They may give other colors, yellow color, orange color, but they are not green colored. As chlorophyll is absent, chloroplast is absent in the cells. They lack plaster like fungi. Slime molds are having 700 to 900 species. Almost all are terrestrial, all are heterotrophic, all are achlorophyllous. Without chlorophyll, yes, they may have some other pigments like anthracene, tricyclic pigment. Anthracenes and anthraquinones may be seen in slime molds, but not chlorophylls. Chlorophylls are lacking in slime molds. That is क्या वनो slime molds such as जमात है living organism यम unicellular च यम eukaryotic च यम heterotrophic च यम parasitic saprophytic halozoic हेकिन आसित यम majority terrestrial च यम dead organic matter पे च decaying woods पे च humus पे च जिंद रोजन और च along with bacteria and fungi best decomposers. The vegetative body, क्योंकि हमने आपको बता दिया हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो होती है उसके दो फेज होते हैं, वेजिटेटिव फेज, प्रोडक्टिव फेज.
हम फंडे की बात कर रहे थे, पहले वेजिटेटिव फेज आता था जिसको हम कहते थे एसिमिलेटिव फेज, उसके बाद मैच्योर फेज। जब हम स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं, द वेजिटेटिव फेज of slime molds is without cell wall। वेजिटेटिव फेज में इनको सेल वॉल नहीं होता है, दे आर जस्ट लाइक एनिमल सेल्स। द body they occur as multinucleate protoplasm called, they occur either as multinucleate protoplasm called plasmodium, the vegetative plant body, the vegetative phase of slime molds is without cell wall. They occur either as multinucleate protoplasm called plasmodium। वेजिटेटिव फेज फर्स्ट फेज लाइफ का होता है। स्लाइम मोल्ड्स का जो वेजिटेटिव फेज है उसमें ये सेल वॉल के बगैर होते हैं, व्हेन दे आर यंग दे डोंट हैव सेल वॉल। एंड देयर बॉडी, जो उनका थैलस है, जो उनकी बॉडी है, that can be either as a multinucleate mass of protoplasm, called plasmodium। हम किसको प्लाज्मोडियम कहते हैं? The multinucleate mass of protoplasm is called plasmodium। प्लाज्मोडियम बनाते हैं स्लाइम मोल्ड्स when they have a mass of protoplasm containing many nuclei, non-cellular या non-unicelled multinucleate mass। Plasmodium is unicelled multinucleate mass of protoplasm, unicellular multinucleate mass of protoplasm is referred as plasmodium। It is acellular mass। प्लाज्मोडियम, जब स्लाइम मोल्ड्स यंग होते हैं तो उनकी सेल्स का न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है, बट द न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, वी हैव मेनी न्यूक्लियर इन द सेम साइटोसोल। So a multinucleate unicellular condition or unicellular structure is formed, which is without cell wall. We refer it as plasmodium. So the vegetative phase of slime molds, which is without cell wall, it occurs as multinucleate protoplasm, mass of protoplasm called plasmodium। यहाँ इस सूरत में or an aggregation of many cells, aggregation of many cells constituting
एग्रीगेशन ऑफ मेनी सेल्स, या तो एक ही सेल जिसके अंदर बहुत से मल्टीन्यूक्लिएट सेल विदाउट सेल वॉल इन द सेम प्रोटोप्लाज्म मेनी न्यूक्लियस, दैट इज प्लाज्मोडियम, या तो इस सूरत में होगी वेजिटेटिव बॉडी सेलाई मोल्ड्स की, या और एन एग्रीगेशन ऑफ मेनी सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सीडोप्लाज्मोड, सीडोप्लाज्मोडियम, या तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं या सीडोप्लाज्मोडियम. So the plant body of or the thallus of slime molds can be either as plasmodium or pseudoplasmodium. The plant body in the thallus of slime molds can be plasmodium or pseudoplasmodium. Pseudoplasmodium. Multinucleate mass of protoplasm. Plasmodial means multinucleate mass of protoplasm. Multinucleate mass of protoplasm. Multinucleate mass of protoplasm is plasmodium. Aggregation of many cells is pseudoplasmodium. Aggregation of many cells is pseudoplasmodium. False. So the plant body of slime molds in its vegetative phase is without cell wall. It can be either a single cell with many nuclei and lacking cell wall, then it is referred as plasmodium, or many single cells may aggregate and constitute a plasmodium-like structure, which is pseudoplasmodium. So slime molds can be plasmodial, they can be pseudoplasmodial. Plasmodial slime molds are acellular and pseudoplasmodial slime molds are cellular. So slime molds can be divided into two groups. Slime molds can be divided into two major groups. Number one, acellular slime molds. And number two, cellular slime molds. Acellular slime molds, cellular slime molds. जो स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाते हैं, वो हुए एसेलुलर.
जो प्लाज्मोडियम नहीं बनाते हैं, जो सीडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं, वो हुए सेलुलर। सीडोप्लाज्मोडियम, सीडोप्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम बनाते हैं वो है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, जो सीडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं वो है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, चाहे एसेलुलर हो या सेलुलर हो। स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस, स्लाइम मोल्ड्स रिप्रोड्यूस by slime molds reproduced by binary fission, spore formation, binary fission, spore formation, plasmotomy, sclerotia formation, and cyst formation. Plasmotomy, spore formation, and binary fission are means of propagation. This sclerotia formation, जैसे हम फंजी में कहते थे, sclerotia formation and cyst formation, these are means of perennation. These are perinating structures. These are propagating structures. The sexual reproduction in slime molds can be isogamous or anisogamous. Sexual reproduction in slime molds can be isogamous or anisogamous. Isogamy, when the fusing gametes are morphologically as well as physiologically similar, जैसा हमने algae में पढ़ा, यहाँ फंजी में पढ़ा. Anisogamous, when the fusing gametes are similar in their structure, in their mobility, this locomotion, they have flagella, but their size is variable. Life cycle is either haplontic, the life cycle of slime molds is either haplontic or diplontic. The life cycle of fungi, these slime molds, is either haplontic or diplontic. Slime molds, unicellular to multicellular यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स. कभी फंजी के साथ रखा गया जिम्नोमाइकोटा, एनिमिलिया के साथ माइसिटोजोआ, फंगल एनिमल्स, और आज जिनको स्लाइम मोल्ड्स के नाम को, स्लाइम मोल्ड्स को आज हम किंगडम प्रोटिस्टा में एज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा पढ़ते हैं. ये यूकैरियोट्स है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, ये पैरासाइट्स है, सैप्रोफाइट्स है, होलोजोइक्स है.
हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल। ये नॉन ग्रीन है लेकिन इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे एंथ्रासीन्स, एंथ्राक्विनोन्स, दे गिव देम कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। These slime molds have flexible lifestyle. When they are young, they don't have cell wall. They exist in two forms, either as a multinucleate mass of protoplasm, what we refer as plasmodium, or a multicellular mass of cells, what is called a pseudoplasmodium. Slime molds with plasmodium are called acellular. Slime molds without plasmodium are called as cellular slime molds. Slime molds, like fungi, reproduce by binary fission, by spore formation, by sclerotia, by by cyst formation. Sexual reproduction occurs in slime molds. It is either isogamous or anisogamous. The life cycle of slime molds is haplontic, that is major phase of the life cycle is haploid phase, or diplontic, major phase of the life cycle is diploid phase. Broadly speaking, slime molds have been divided into two major groups, two major classes: acellular slime molds and cellular slime molds. Acellular slime molds are called plasmodial slime molds, and cellular slime molds are called pseudoplasmodial slime molds. In my next lecture, I will talk about acellular and cellular slime molds. Assalam.